So lymphoid organs. What are the lymphoid organs first of all? In these organs, जो lymphoid organs है ना, इनके अंदर, in these organs, origin, maturation, and proliferation of lymphocytes occur. ठीक है, तो इन ऑर्गन्स में क्या होगा? Maturation and the proliferation means division of the lymphocytes. ठीक है, lymphocytes की origin होगा, maturation होगी, proliferation होगी lymphoid organs के अंदर. जो lymphoid organs है ना, these are of two types. Lymphoid organs are of two types. Two types of lymphoid organs are there. Two types of lymphoid organs are there. Right? कौन कौन से two types के lymphoid organ? एक को तो बोलते हैं primary lymphoid organs, and the secondary lymphoid, primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. So first of all, primary lymphoid organs, and then are the secondary lymphoid organs. Secondary lymphoid organs. Okay, जो primary lymphoid organ है, these are the organs. क्या होता है यहाँ पे? primary lymphoid organs क्या होते हैं? These are the organs where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. ठीक है, जो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में. क्या होगा? जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, दोज आर कन्वर्टेड इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स. ठीक है, जो एंटीजन सेंसिटिव है उन लिम्फोसाइट्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगे. राइट? देन क्या होगा फिर? और यहाँ पे आफ्टर मैच्योरेशन lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs. So secondary lymphoid organs में चले जाएंगे मैच्योरेशन के बाद. ठीक है, जो lymphocytes है फिर कहाँ चले जाएंगे? secondary lymphoid organs में. ठीक है, पहले वो क्या हो गए? जो इमेच्योर थे वो मैच्योर हो गए, मींस एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए. देन आफ्टर मैच्योरेशन जो लिम्फोसाइट्स है those migrate to the secondary lymphoid organs. ठीक है, इनकी एग्जांपल कौन सी है? एग्जांपल कौन सी मींस प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं. एग्जांपल्स इसमें आप लिख लो. is the thymus and second is the bone marrow.
thymus and the bone marrow. ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए. यहाँ पे क्या होगा, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है वो क्या होंगे, एंटीजन सेंसिटिव हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे. फिर वो कहाँ चले जाएंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में चले जाएंगे. प्राइमरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, थाइमस एंड द बोन मैरो. ठीक है. देन लेट अस डू अबाउट द secondary lymphocytes. These organs provide the sites for interaction of lymphocytes with antigens. ठीक है. तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा, एक तरह की साइट्स है, जगह है जहां पे लिम्फोसाइट एंड एंटीजेंस के बीच इंटरेक्शन होगा. ठीक है. लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन होगा. ठीक है. देन lymphocytes then proliferate to become effector cells. Lymphocytes then proliferate to become effector cells. ठीक है. तो फिर क्या होगा, लिम्फोसाइट्स इफेक्टर सेल्स में चेंज हो जाएंगे. अब क्या हो गया, इफेक्टर सेल्स हो गए. लिम्फोसाइट्स पड़े थे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, वो बने, मैच्योर हुए, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आ गए. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या हुआ, में एंटीजन आए. जब वो एंटीजन के कांटेक्ट में आए तो वो किस पे चेंज हो गए, इफेक्टर सेल्स पे चेंज हो गए, इफेक्टर सेल्स. ठीक है. राइट. तो इनकी एग्जांपल कौन सी हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की एग्जांपल्स. कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, कौन कौन सी ऑर्गन्स है जो विच आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे. राइट. वन इज द spleen. Right. Then is the lymph nodes. Then tonsils. Okay. Then are the Peyer's patches. Okay. And appendix. Form appendix किया था ना हमने, that one. And the malt. अभी ये malt क्या है, malt का फुल फॉर्म हम आगे करेंगे. म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ठीक है. malt क्या है, नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं लिखूंगी इसको, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. तो यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लो, फिर बाकी लिखते रहेंगे माल्ट का. माल्ट. ठीक है. व्हाट इज द माल्ट, इट इज द म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue. Okay. माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ये तो इसकी होगी फुल फॉर्म. राइट. ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म. इसके बारे में सारे लिख लेते हैं. व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड. व्हाट इज द माल्ट, इट इज द
lymphoid tissue. It is the lymphoid tissue located within the lining of the major ट्रैक्ट्स. मेजर ट्रैक्ट कौन कौन सी मेजर ट्रैक्ट हो गए? जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट, देन ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी, digestive and urogenital tracts. Urogenital tracts, ठीक है, urogenital tracts. So mucosa associated lymphoid tissue क्या चीज है? It is a lymphoid tissue located within the lining of major tracts. जो major tracts है ना अपनी बॉडी में, like respiratory tract है, digestive tract है, urogenital tract है, ठीक है, उसकी लाइनिंग पे ये प्रेजेंट है, ठीक है, mucosa associated lymphoid tissue, राइट, उसकी लाइनिंग पे ये प्रेजेंट है ट्रैक्ट्स की. इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, जो मॉल्ट है, इट कॉन्स्टिट्यूट about 50% of the lymphoid tissue in 50% of the lymphoid tissue in human body. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो lymphoid tissue है उसका 50% को क्या बनाता है? माल्ट ही बनाएगा, ठीक है. सो mucosa associated lymphoid tissue, राइट. सो ये क्या है, 50% सारे टिश्यू का तो ओनली माल्ट ही बना देगा. ये कहाँ पे प्रेजेंट है? at the lining of the within the lining of the major tracts like the respiratory, digestive and the urogenital tracts. Okay, ठीक है. सो प्राइमरी में लिम्फोसाइट्स क्या इमेच्योर थे जो मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, राइट. यहाँ पे क्या होगा? इमेच्योर लिम्फोसाइट मैच्योर हो गए. पहले तो लिम्फॉइड ऑर्गन है, वहां पे ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स होगा. टू टाइप का है, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होगा? जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है वो मैच्योर बन गए, मैच्योर होके फिर वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चलेगी. मैच्योर बन गए मींस वो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होगी. प्राइमरी lymphoid organs thymus and the bone marrow. Secondary lymphoid organ, these organs provide the site for interaction of the lymphocytes with antigens. So ये जगह है वो जहाँ पे एंटीजन एंड लिम्फोसाइट आपस में इंटरेक्ट करते हैं. इस लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में एंटीजन्स आएंगे. जब लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में एंटीजन्स आएंगे तो लिम्फोसाइट चेंज हो जाएंगे इफेक्टर सेल्स में, सो दैट वो इफेक्ट कर सके, ठीक है, एंटीजन को खत्म कर सके. तो कौन कौन से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है? स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, माल्ट, अपेंडिक्स एंड द पायर्स पैचेस. ये आपको पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी में क्या फंक्शन होने हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या फंक्शन होने हैं, राइट. दानों की एग्जांपल्स कैन बी आस्क्ड. व्हिच वन ऑफ द lymphoid organs and which one are the secondary lymphoid organs. So जो माल्ट हो गया है ना, राइट, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आता है ना, तो ये वो लिम्फॉइड ऑर्गन में से लार्जेस्ट हो गया क्योंकि ये अकेला ही 50% लिम्फॉइड टिश्यू का ये ह्यूमन बॉडी का बना रहा है, ठीक है. ह्यूमन बॉडी के लिम्फॉइड टिश्यू का ये अकेला ही बना रहा है, राइट. देन हम आगे चलते हैं. Then let us do a little about the bone marrow. हम just NCERT बेस बना के ही कर रहे हैं. जितना NCERT में we are doing that only, and that much is more than sufficient for your exams. Okay, no need for the extra. हम बहुत कुछ कर चुके हैं जहाँ जहाँ पे requirement थी. So bone marrow. What is the bone marrow? So it is the main lymphoid organ. Bone marrow, ठीक है.
बोन मैरो हम करके आए हैं ना, बोन मैरो एंड थाइमस, राइट, जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन थे, राइट, बोन मैरो एंड थाइमस. So bone marrow, it is the main lymphoid organ. Bone marrow है जो. Here all blood cells including lymphocytes are produced. यहाँ पे सारे blood cells यहीं पे बनते हैं. ठीक है, जो भी blood cells हैं those are produced in the bone marrow. Here all blood cells including lymphocytes are produced. ठीक है, तो वैसे बोन मैरो है क्या चीज, ये तो इसके हमने फीचर्स कर लिए. बोन मैरो है क्या? इट इज बोन मैरो जो इट इज अ सॉफ्ट sponge-like tissue in the center of most bones. ठीक है, most bones के सेंटर में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, that is called the bone marrow. soft spongy tissue, that is called the bone marrow. वहां पे क्या होता है, सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द थाइमस. प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. थाइमस, राइट, जो थाइमस है, it is a lobed organ located near the heart के पास प्रेजेंट होता है, ये lobed organ होता है. ठीक है, located near the heart. And beneath the breastbone के क्या होगा, नीचे प्रेजेंट होगा. हार्ट के पास breastbone के नीचे. जो breastbone है, बोन्स हम कर चुके हैं सारी. breastbone का नाम क्या है भाई? What is the name of the breastbone? Sternum, है ना, sternum की थी ना हमने, उसके नीचे प्रेजेंट होगा, right? And it is quite large. At the time of birth. ठीक है, बर्थ के टाइम ये लार्ज है, राइट, and birth keeps reducing in size with age, reducing in size with age. एज के साथ साथ ये क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, राइट, ओके. एंड बाय द टाइम ऑफ द puberty, जब puberty पर्सन की, राइट, तब तक क्या हो जाता है, it reduces to very small size, बहुत ही छोटा हो जाता है. ठीक है, and by the time of the puberty it reduces to very small size. लिख देते हैं यहाँ पे. Okay, by the time of puberty आपको पता है ना, puberty is reproduction करके आते हैं. ठीक है, by the time puberty it reduces to very small size. Okay. By the time of puberty, it reduces to
वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा हो जाएगा पुबर्टी एज तक तो ये। ओके, थाइमस थाइमस ग्लैंड जो हम करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आप देखोगे। राइट, सो +1 का है ना चैप्टर, एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसके थाइमस ग्लैंड करते हैं, वही है ये। राइट, देन थाइमस एंड बोन मैरो, ठीक है, थाइमस एंड बोन मैरो provides microenvironments for development and maturation of T lymphocytes. ठीक है, thymus and bone marrow provides microenvironments for development and maturation of T lymphocytes. ठीक है, सो थाइमस भी क्या होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट थाइमस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स है जो मैच्योर, राइट। तो स्प्लीन में क्या क्या होता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसके फंक्शन है। स्प्लीन है जो, राइट, सो स्प्लीन इट इज लोब्ड ऑर्गन, it is lobed organ, just sorry, हम spleen कर रहे हैं, not thymus. It is a large bean shaped organ, it is a large bean shaped organ, ठीक है, spleen क्या है, large bean shaped organ है, and it mainly contains lymphocytes and phagocytes. Lymphocytes and phagocytes. Mainly इसमें क्या होता है, lymphocytes and the phagocytes. It has a large reservoir of erythrocytes. RBCs इसमें क्या होते हैं, स्टोर होके रहते हैं, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा आरबीसीज है यहाँ पे स्टोर होके रहेंगे, इसलिए इसे ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं सभी, ठीक है। इट हैज अ लार्ज reservoir of erythrocytes, right? So it is also called the blood bank of the body. Then it acts as filter of blood. It acts as filter of blood by trapping blood-borne microorganism. Trapping blood-borne microorganisms. ठीक है, जो ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ये क्या करता है, जो ब्लड के थ्रू जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको ये ट्रैप कर लेता है, ठीक है, राइट, एक तरह के फिल्टर का काम करते हैं, ठीक है। इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। सो स्प्लीन लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होगा, contains lymphocytes and phagocytes and has a large reservoir of the erythrocyte. It acts as a filter of blood by trapping blood-borne microorganisms. Then next है lymph nodes. ठीक है, जो हमने पहले किया था, thymus and the bone marrow, those were the primary lymphoid organs.
and now we are doing the spleen. We have done the spleen and we are doing the lymph nodes. ये दोनों क्या है? Secondary lymphoid organs. Lymph nodes. Now lymph nodes. Lymph nodes. So lymph node के feature लिख लेते हैं हम. So first of all, what are the lymph nodes? Lymph system हमने circulatory system में है ना बहुत अच्छे से किया हुआ है. तो these are small solid structures. These are small solid structures. Right? These are located at different points along lymphatic system इनका काम क्या है? These trap lymph nodes है जो these trap microorganisms or other antigens which happen to get into lymph and tissue fluid. Tissue fluid. ठीक है, जो lymph and tissue fluid में आते हैं उन्हें ये ट्रैप ऑर्गेनिज्म को ज्यादातर antigens. ठीक है, then antigens trapped in the lymph in the lymph nodes are responsible for the activation of lymphocytes which are present here and cause the immune response. ठीक है, so antigen trapped in the lymph nodes are responsible for the activation of the lymphocytes. So जो antigen क्या होंगे lymph nodes के अंदर ट्रैप हो गए हैं, उनका क्या काम है? वो क्या करेंगे? एंटीजेंस जो वहां पे lymphocytes हैं उन्हें एक्टिवेट कर देंगे. ठीक है, एक्टिवेट कर देंगे और फिर क्या होगा? ऑब्वियसली it cause the immune response. Immune response जनरेट हो जाएगा जब lymphocytes activate हो गए. Now all of you are having the NCERTs, I think. तो उसमें देखो एक डायग्राम है, डायग्राम showing the lymph nodes. एक ही डायग्राम बनी है ना, तो दिख रही है ना वो आपको? Yes, vessels and छोटे round से लगाए हुए हैं. Okay, lymph nodes, and that diagram is also showing the thymus gland है जो हार्ट के पास है ना, वो भी आपको दिख रही है.